everyone, welcome at my channel. I'm Basit Nazir for the most amazing concepts of physics. इससे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की एक वीडियो अपलोड की थी ऑन द चैनल, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सिलेक्ट किया था जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट करेंगे इन द फाइनल एग्जाम्स। अब इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्ट्रेस लेवल ऑन द पीक होगी एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम ऐसे होंगे जो ये चाहते हैं कि अब इस वक्त उन्हें कुछ लिमिटेड टॉपिक्स मिल जाए, ना कि चैप्टर्स, वो लिमिटेड टॉपिक्स मिल जाए जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो मैंने कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया है एंड आउट ऑफ दोज टॉपिक्स आई विल बी डूइंग आई गेस 10 टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन, जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल डेफिनेटली बी आस्क्ड इन द फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, नाउ हाउ एग्जैक्टली वी विल बी डूइंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा रिगार्डिंग द कंसेप्ट एंड आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दैट concept. Now, moving ahead, what exactly we are going to discuss for today is today's learning outcomes, and in that we will be doing thermal expansion. पहले मैं thermal expansion का छोटा सा concept आपको बताऊंगा, and after that हम इसके numericals करेंगे. After that हम करेंगे Stephen's law को, Wien's displacement law को, Newton's law of cooling को हम करेंगे, conduction of rods को करेंगे, escape velocity को हम करेंगे, Kepler's law को हम करेंगे. These two are from gravitation. इसके बाद हम standing waves को करेंगे and organ pipes को करेंगे. After that we will do beats and Doppler effect, and last में जो हमारा topic होगा for this session, that will be wave speed on the string and sound. We will be exactly doing this series in I guess 2 or 3 more sessions. ठीक है, तो आज का अगर हम स्टार्ट करेंगे, आज का सेशन अगर हम स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट यू ऑल टू स्मैश द सब्सक्राइब बटन डाउन देयर, एंड इसके अलावा वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ let's start today's concept number 1, and the concept number 1 is that thermal expansion. What all you need to remember in thermal expansion is, first thing जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, whenever we heat an object, the object expands, and opposite is also true. That means whenever we cool an object, जब भी हम कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे एक ऑब्जेक्ट को, वो कंट्रैक्ट हो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर। नाउ सपोज मेरे पास एक रॉड है, सपोज दिस इज अ रॉड, आई हैव अ रॉड। ठीक है, इसकी लेंथ है L नॉट at the temperature T naught, and after some time if I increase the temperature of this rod, to T degrees centigrade, right, or T degrees, and its length becomes L. First of all its length was L naught, now its length has become L. First of all its temperature was T naught, now I have kept the rod at the temperature of T. ठीक है, तो अगर मुझे इस L को कैलकुलेट करना होगा, the L is given by, the final length is given by the initial length, that means L naught multiplied by 1 plus, this is alpha, this is delta T, this is alpha, this is delta T. Now what you need to understand over here is that what is this alpha? ये alpha होता क्या है? इसको हम बोलते हैं coefficient of thermal expansion, ठीक है। and what is this delta T? ये delta T क्या होता है? This is basically temperature difference, और इसको मैं लिख सकता हूं T माइनस टी नॉट, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर भी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा L विल बी इक्वल टू, इस L नॉट से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और L नॉट, ये L नॉट जो है ये इस साइड में अगर लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ये माइनस हो जाएगा। दैट मींस L माइनस L नॉट विल बी इक्वल टू L नॉट, दिस विल बी अल्फा, दिस विल बी डेल्टा टी, एंड L माइनस L नॉट, व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली डेल्टा L की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी L नॉट, दिस विल बी अल्फा, एंड दिस विल बी डेल्टा टी, where delta T is the change in temperature, and this delta L in the similar way, ये जो delta L है, this will be change in length. Now similar type of expansion happens when we talk about area or when we talk about volume. For example, I have an area, this is area, and let me call this as A naught. This is at temperature T naught, and after some time when I increase the temperature to T, the area also increases to A. Clear? Now I can write the similar expression for the area as well. What I can write is, मैं लिखूंगा area will be equal to A naught multiplied by 1 plus beta delta T. Over the linear expansion, I wrote alpha delta T, and on the aerial expansion, what I will be writing is, I will write beta delta T. What's this beta?
the beta is called the areal coefficient of areal expansion. और सिमिलरली जिस तरीके से मैंने वहां पर डेल्टा एल को लिखा था, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डेल्टा ए, दैट मीन्स चेंज इन ए, दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट, दिस विल बी बीटा, दिस विल बी डेल्टा टी. दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट. और इस यहां पर मैं आपको एक रिलेशन बताना चाहूंगा अल्फा एंड बीटा के बीटवीन. जो बीटा होता है दैट्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, दैट्स इक्वल टू टाइम्स ऑफ अल्फा. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हो गया केस नंबर 2 इन केस ऑफ एरिया. ठीक है, एरियल एक्सपेंशन. Similar thing happens if we talk about volume expansion. For example, I have a certain volume. This is V naught at T naught, and after increasing the temperature, I get the volume as V, and this is the final temperature, that is T. That's the temperature T, right? And a similar expression I can write in case of this volume expansion is V will be equal to V naught 1 plus, here it will be gamma delta T, here it will be gamma delta T. और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेल्टा वी, दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वी नॉट, दिस विल बी गामा, दिस विल बी डेल्टा टी, दिस विल बी डेल्टा टी. नाउ एन इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा गामा एंड अल्फा के इन बिटवीन. गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा. दैट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई गेस वी आर एट द राइट पॉइंट टू do some numericals on this, right? NEET 2019 का question it says coefficient of linear expansion of brass and steel rods are alpha 1 and alpha 2. Lengths of brass and steel rods are L1 and L2 respectively. If L2 minus L1 is maintained same at all the temperatures, which of the following relations hold good? इनमें से हमें बताना है कि कौन सी रिलेशन यहाँ पर गुड होगी. क्वेश्चन में बताया गया है कि if L2 minus L1 is maintained at all the temperatures, what's L2 minus L1? This is basically change in the length. This is basically change in the length. So I can write over here delta L1 will be equal to delta L2 because this is constant, this is maintained constant. So L1 को मैं कैसे लिखूंगा? L1 को मैं लिख सकता हूँ L1, this will be alpha 1, this will be delta T, that means change in the temperature. This will be equal to L2 alpha 2 and multiplied by delta T. Now delta T over here and delta T over here is same, so these will cancel out each other. So what we will be left with is alpha 1, this is L1 will be equal to alpha 2 L2. L1 alpha 1 will be equal to L2 alpha 2. Hence the answer should be option number A. Hence the answer should be option number A. This was NEET 2019 ka question, right? After it, moving to the next question. Next question says the value of coefficient of volume expansion of glycerine is 5 multiplied by 10 power minus 4 degree centigrade. The fractional change in the density of glycerine for the rise of 40 degree centigrade in its temperature is. जब हम temperature को increase करेंगे, what will be the change in the density? What will be the change in the density? What will be the change in the density? First of all, क्या कोई density की हमें formula पता होती है? Yes. मैं लिखूंगा density will be equal to mass per unit volume, mass upon volume. अगर मैं इसको फर्दर मॉडिफाई करूंगा, मैं लिख सकता हूं m पावर 1 एंड दिस विल बी v पावर माइनस 1, v पावर माइनस 1. ये जो मास है दिस कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट होता है. तो आई कैन राइट हियर चेंज इन दिस डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी विल बी इक्वल टू माइनस 1 टाइम्स, बट यहां पर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा, चेंज इन दिस वॉल्यूम, एरर इन दिस वॉल्यूम, राइट. और इस डेल्टा v को मैं फर्दर मॉडिफाई अगर यहां पर करूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं v, this is gamma, this is delta t, v gamma delta t divided by this volume, v से v cancel out हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगी फाइनल एक्सप्रेशन that will be gamma, this will be delta t, gamma delta t. What was that? That was basically this density change. Now यही मुझे फाइंड आउट करनी है. मैं यहाँ पर लिखूंगा change in this density will be equal to gamma multiplied by delta t. क्या मैं गामा के वैल्यू को जानता हूं? यहाँ पर दिया गया है. क्या मैं डेल्टा टी को जानता हूं? वो भी दिया गया है. तो गामा के वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट्स द चेंज इन टेम्परेचर, दैट्स 40 डिग्री. जब हमने टेम्परेचर को चेंज किया, दैट मीन्स 5 4s आर, दिस इज 20, दिस इज अगेन वन मोर 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 4, that's equal to 2 multiplied by 10 power minus 2. Hence the answer should be option number C. 0.020. I hope that's clear. After that, if we talk about next concept, that's Stephen-Boltzmann law. What exactly this law says is, first of all, let's consider a body. We have a body that's a really hot body.
and it emits radiations in all the directions. It emits radiations in all the directions. Let's suppose the area of this body is A. Let's suppose the area of this body is A, and the temperature at which this body is kept is basically T. The temperature of this body is T. Now, according to Stefan Boltzmann law, what it says heat per unit time is given by E multiplied by sigma multiplied by area multiplied by temperature raised power 4 multiplied by temperature raised power 4. Now what is this E over here? ये E है क्या यहाँ पर? E जो है यहाँ पर, it's called emissivity. It's called emissivity. After that, अगर मैं emissivity की बात करूंगा for a black body, that's equal to 1. That's equal to 1 for a black body. For a black body, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर रिमेंबर कर लीजिएगा. इसके अलावा व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 5.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 8. 5.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 8. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. नाउ ये जो Q है इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं. अगर मैं सॉलिड्स या लिक्विड्स की बात करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं Q विल बी इक्वल टू mc डेल्टा T. यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता के रखता हूं. और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं mc डेल्टा T फॉर गैस, और mc डेल्टा T दिस इज फॉर सॉलिड, और इफ आई टॉक अबाउट लिक्विड, ठीक है. और मैं इसको लिख सकता हूं Q विल बी इक्वल टू ml where L is the latent heat. Clear? Everybody with me on this? After that, we'll be doing some questions on that. This was the short concept. After that, let's do some questions. The question number 1 on this concept says a spherical black body of radius 12 centimeter radiates 450 watt power at 500 Kelvin. If the radius were halved and the temperature doubled, अगर हमने radius को half किया and temperature को हमने double किया, the power radiated would be, what would be the next power radiated? For example, this is the body, and it has the radius r, and it is at the temperature T. It radiates the radiation, right? Now, using the Stefan's law, what we can write is Q upon T. This is basically the power. Energy per unit time. This is basically the power, and this is given by E emissivity multiplied by the sigma, जिसकी जो एक constant है जिसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, multiplied by the area of that particular body, multiplied by the temperature at which the body is kept, raised power 4. This is all we need to remember. Now I can write this power को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा. Emissivity for the black body, this is a black body. Emissivity for a black body is equal to 1. It's 1 multiplied by this is sigma multiplied by what's the area of this spherical? What is the area of a sphere? That's 4 pi r square. 4 pi, this will be r square multiplied by this will be the temperature raised power 4. This will be the temperature raised power 4. Correcto? After that, I can write power as E nu. This was the power initial. After that, I can write power nu as, let me write it with another color. This will be power nu. What will be the new power? After we have halved the radius and we have doubled the temperature. That will be 1. This will be multiplied by sigma multiplied by 4 pi. Now, the new radius is basically half of the initial radius. That will be r by 2 ka square multiplied by this will be 2t power 4. After solving this equation, I will get 1 multiplied by sigma multiplied by 4 pi. This will be r square. This will be multiplied by t power 4 multiplied by 2 power 4. That's basically 16 divided by 2 power 2 ka square. That's basically 4. That means 4 ones are 4 fours are. I got new power new I got as power initial multiplied by 4. Power initial multiplied by 4. Now, what was the initial power? Initial power was 450 multiplied by 4. This is a 0. This will be 0. This will be 8. This will be 1. Hence, 1800 watts will be the answer. 1800 watts will be the. After it, moving to the next question that was asked in NEET 2017. The question says the total radiant heat, the total radiant energy per unit area normal to the direction of incidence received at the distance r from center of the star of radius r whose outer surface radiates as a black body at the temperature T Kelvin is given by. हमें यहाँ पर बताना है कि total radiant energy per unit area. Now suppose it's a star. It has the radius r.
when it emits the radiation per unit area, for example, like this will be the radius capital R, this will be the radius capital R, this will be the radius capital R. We are supposed to find out at this point R, the capital R. We are supposed to find out the radiations at this point, the capital R, right? Now, using the Stephen's law, what I can write is Q upon T, heat per unit time, or I would say the power, that's given by, this is E, this is sigma A, this is T power 4, this is T power 4, right? और इसको मैं अगर लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये एक ब्लैक बॉडी है, ये एक ब्लैक बॉडी है, तो E की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1 multiplied by this will be sigma multiplied by this will be area multiplied by this will be temperature power 4, और इसको मैं अगर फर्दर मॉडिफाई करूंगा, मैं लिखूंगा सिग्मा, दिस विल बी सिग्मा multiplied by what will be the area, this will be 4 pi r square, r of this is basically the small r, the radius of the body that emits radiations, correct, multiplied by T power 4, is that clear? After that I can write this was heat radiated per unit time. What I have to find out, heat radiated per unit time, per unit area. Now I can write it as Q upon T, heat per unit time per unit area, that means divide it by area. I would divide it by area. This will be equal to sigma multiplied by, this will be 4 pi r square multiplied by T power 4 and I will divide this whole term again by area, that means 4 pi, but here it will be capital R square because I have to find out the radiations, the heat emitted on this area. This is the area where I am supposed to find out the radiation, right? This will be capital R, everybody with me? After that I can shuffle these equations, these terms over here, and I will write this will be sigma 4 pi and 4 pi gone. What I will be left with is ऊपर मेरे पास रहेगा small r का square and this will be T power 4 and नीचे मेरे पास रहेगा capital R का square, Is there any option like this? So sigma r square T power 4, option number B. Hence the answer should be option number B. Now moving to the next concept is Wien's displacement law. What's Wien's displacement law? According to this Wien's displacement law, the wavelength maximum, that means the maximum wavelength emitted by a body, is inversely proportional to the temperature. Is that clear? Or in other words, I can write it as lambda max dot temperature. This is constant for a body, for a black body. एक black body के लिए lambda multiplied by T जो होता है ये constant रहता है. For example, if I draw the graph between energy and lambda, this is lambda and this is energy, the graph will run like this. It will run like, right? और ये जो है इसको मैं बोलूंगा lambda max, and this will be at higher temperature, right? और अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर को शिफ्ट करूंगा कुछ इस तरीके से, लेट मी ड्रा दैट बाय अनदर कलर. अगर मैं टेम्परेचर को यहाँ पर शिफ्ट करूंगा कुछ इस तरीके से, तो मेरा ये वाला जो पॉइंट है, दैट मींस लैम्डा मैक्स वाला जो पॉइंट है ये भी शिफ्ट होगा अकॉर्डिंगली. दिस इज ऑल अबाउट Wien's displacement law. Let's do some questions on this. The question says we have got 3 stars, A, star B and star C, and they have same temperature TA. They have surface temperature equal to TA, TB and TC. A appears bluish. A जो है ये ब्लू कलर का है. B जो है it's having a reddish color, and C जो है it appears yellowish. Now we can conclude that, what we can conclude from here. First thing, if I have to arrange these 3 stars, bluish star, red star and yellowish star on the basis of wavelength, how I can beta B, that means reddish, a star with the reddish, or I would say the red color has got the maximum wavelength will be of red, right? And A will be having minimum wavelength, so C will be in between these. This is the order of wavelength, but we know that lambda is inversely proportional to temperature. What will be the order of temperature? It should be TA greater than TC, that should be greater than TB. TA greater than TC, that should be greater than TB.
TB will be having the least temperature according to Stefan's law, according to this Wien's displacement law. Is that clear? Is that clear? Now, after that, moving to the next question. Next question says a black body is at a temperature of 5760 Kelvin. The energy of radiation emitted by the body at the wavelength of 250 nanometers is U1. At the wavelength of 500 nanometers is U2, and that at 1000 nanometers is U3. Wien's constant B is equal to 2.88 multiplied by 10 power 6. Which of the following is correct? यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी वाली रिलेशन करेक्ट होगी. अंडरस्टैंड, अगर हम यहाँ पर Wien's displacement law को अप्लाई करेंगे, lambda is inversely proportional to the temperature. Lambda is inversely proportional to the temperature. Is that clear? That means energy will be maximum for that body. Energy will be maximum for that body which has got minimum wavelength. So I can write over here U1 that will be greater than U2, that will be greater than U3. U1 will be greater than U2 and that will be greater than U3, and the answer should be easy peasy question. After that, moving to the next concept, that's Newton's law of cooling. What's Newton's law of cooling? According to Newton's law of cooling, rate of change of temperature with respect to time is directly proportional to the temperature difference. That is directly proportional to the temperature difference. Mathematically, if I would write it, we can write it as d by dt. The smaller t, that is basically the time, rate of change of this capital T, and the capital T is basically the temperature. This is directly proportional T minus this is T surroundings, right? T surroundings. Is that clear? Now I can write this as d by d smaller t of capital T. That means rate of change of this temperature with respect to time. This will be equal to some constant. Let me call that as C, multiplied by this will be T minus T naught, where T naught is the temperature of the surrounding. This is the first thing that you need to remember over here. After that, one more thing that you should remember is, if I am supposed to draw, for example, a graph in between the temperature and time. For example, this is time along the x-axis, and along the y-axis, if I draw the temperature, if I draw temperature, now the graph runs like this. This is the initial temperature. This is the initial temperature. And this is basically the temperature of surrounding. Now, at any instant, if I draw the tangent to this curve, this is the curve like this, and at any instant, if I draw a tangent like this, a tangent to this curve, what is the tangent? The slope of this tangent will give me the rate of cooling. Crazy it is. The slope of the tangent will give me the rate of cooling. Is that clear? Everybody with me? So I can write it again as the slope will give me the slope, basically the magnitude of the slope. It's going to give me the rate of cooling, and rate of cooling I can write d by dt of this is capital T. What is this capital T? This is temperature. And what is the small t? This is basically the time. इस capital T को आप theta से भी represent कर सकते हो in order to avoid the confusion in between this capital T and the smaller t. That basically the temperature and the smaller t is the time. Is that clear? Everybody with me? Now let's do some problems. The question from NEET 2019. First of all, what's given to us? The question says an object kept in a large room having air temperature of 25 degrees centigrade takes 12 minutes to cool from 80 degree to 70 degree. We have a body at 80 degrees, and from 80 to 70 degree, it takes 12 minutes. Right? From 80 degree to 70 degree, it takes 12 minutes. And from 70 to 60 degree, how much time will it take? From 70, after that it goes to 60. Now the question is asking, it takes t minutes. What's the value of t? First of all, let's use the formula. What's the formula? The change in the temperature, basically the temperature difference. What will be that? 80 minus 70. That will be 80 minus 70 divided by the time. Time is basically 12. That will be equal to C. That's the constant, multiplied by, here's the temperature, basically the average temperature of these two temperatures. So I can write it as 80 plus 70 divided by 2 minus temperature of the surrounding.
and the temperature of the surrounding is 25 degree, and the temperature of the surrounding is 25 degree. Everybody with me? So I can write it as this will be 10 divided by this will be 12, that will be equal to C multiplied by 80 plus 70, इनका average जो है that will be 75, and 75 minus 25, this will be C multiplied by 50. C multiplied by 50. Let me call this as equation number 1. Let me call this as equation number 1. Now in the second scenario, let me again revise this formula. Let me again apply this formula. How I can write? First for equation number 1, this was for the condition number 1, and for condition number 2, let me again apply the similar formula. How I can write is, first of all, I will write the temperature difference. That means 70 minus 60 divided by time. That's basically the T which I am supposed to find out. That will be equal to C, some constant, multiplied by the temperature, average temperature of the 70 and 60. What will be that? That will be 65. That will be 65 minus the temperature of the surrounding. That will be 25. That will be 25. I hope that's clear. I hope that's clear. So इसको मैं अगर solve करूँगा, that will be 70 minus 60. What will be that? That will be 10 divided by T. 10 divided by T, and it will be equal to, this is C multiplied by 65 minus 25, and that's equal to 40. That's equal to 40. Let me call this as equation number 2. Now equation number 2 and equation number 2, if I divide these equations, what will I get? I can write them as, this will be 10. Let me change the color of the pen over here. I can write them as 10 upon 12 divided by temperature 2, that means 10 upon T, that will be equal to C multiplied by 50, and in the denominator it will be C multiplied by 40. C multiplied by 40. C and C will cancel out, 0 and 0 will cancel out, 10 and 10 will cancel out. I will get T divided by 12, and that will be equal to 5 upon 4. 4 ones are, this will be 4 threes are. The value of T I will get equal to 15 minutes. The value of T will be equal to 15 minutes. The value of T will be equal to 15 minutes. Hence the answer should be option number D. Option number D. After that, let's move to the next concept. That's concept of conduction in rods. For example, I have a rod. This is the rod. That I have, and if I give some heat, that means Q in. The heat that goes in this body, the heat that goes inside this rod will be equal to the heat that comes out of this rod, will be equal to the heat that comes out of this rod. Is that clear? Now over here I can write Q in, that means the heat that goes inside per unit time will be equal to the heat that comes out per unit time. और इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं, दिस विल बी Q अपॉन T, और इसी को मैं बोलता हूं हीट करंट. इसी को मैं बोलता हूं हीट करंट. Is that clear? Very important. Now how I can write this heat current? I can write Q upon T. This is given by the formula K multiplied by A multiplied by delta T divided by the L. What is this K? Over here I have used a constant K. What is this K? This is basically the conductivity. This is called the conductivity. Now I will get an amazing formula over here by having a little shuffle in this formula. How I can do that? First of all, let me write this delta T. This delta T will be equal to L upon Ka multiplied by this is Q upon T multiplied by this is Q upon T multiplied by this is Q upon T. Now understand, this Q upon T, this segment, this is called heat current. And this L upon Ka, this is basically called the thermal resistance. And this delta T, this is temperature difference. This is temperature difference. So from here I got the formula of thermal resistance. What is the formula of thermal resistance? That's basically L upon Ka. A very important formula. Now how can you use this formula, and where should you use this formula? For example, we have the combination of rods. For example, I have got this combination of rods. Okay, for example, I have got this combination of rods where I have got two rods that are joined in series. For example, I have got two rods that are joined in series. This is having a resistance R1 and this is having a resistance R2. Now the equivalent resistance
R equivalent will be equal to R1 plus R2, simply the summation of these two resistors. In the similar way, if I have a resistor, if I have a rod, two rods for example, having a resistor a resistance R1, and I have another rod, like this, I have another rod like this having the resistance R2, and these two rods are connected in parallel. For example, this is the parallel combination, this is the parallel combination. Now over here you can also use the equivalent resistance formula. That means 1 upon R equivalent will be equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, and so on and so on. That's crazy, that's crazy. I hope everyone is clear. I hope everyone is clear. Now let's do some questions. Question number 1. A cylindrical metallic rod in the thermal contact surveyor of heat at its two ends conducts of heat Q in time T. It conducts heat Q in time T. The metallic rod is melted and the material is formed into a rod of half the radius of the original rod. What is the amount of heat conducted by the new rod when placed in the thermal contact with the two reservoirs in the time T? Now understand, if firstly I will use the formula of heat current, what I can write Q upon T, that means heat per unit time, that will be equal to K multiplied by A multiplied by delta T divided by L. Everybody with me? I can write it further. K, this will be K, this will be A, this will be delta T, and this length basically I can write it volume per unit area. Is that clear? So I can shuffle this equation again. I can write this will be K, this will be delta T, this will be divided by volume, and this area will go up and it will make with another area, it will make A square. This will make A square, and I can write it K, this will be delta T upon V multiplied by what will be the area square? Pi r square whole square, right? So this I can write it again. Let me write it again. I can write it K, this will be delta T upon V, and this pi square, basically pi r square, I will attach with this. This will be pi r square dot, this will be r power 4. R square whole square, that means r power 2 multiplied by 2, r multiplied r power 4. Now this whole term you are seeing over here, this whole term, look at this whole term, this will be a constant, so I can over here I can see that this heat per unit time, or I would say the power, this is basically directly proportional to r power 4. Now if I have the initial heat as Q, now after halving the radius, the question says when I have halved the radius, now I have to find out the original heat, right? I have to find out the final heat. What will be that? That will be half of, because I have halved the radius. This will be half of r power 4. This will be half of power 4, because radius over here is halved. That means that will be 1 upon 16 times. The original. That means answer should be option number B. Next question over here is that the two rods. I have, for example, two rods over here. The two ends of a metal rod are maintained at the temperature 100 degree and 110 degree. I have a rod, right? And its ends are maintained. One is at 100 degrees centigrade and another end is at 110 degrees centigrade. Is that clear? What is the temperature difference? I would write that over here. What is the temperature difference? That means delta T will be equal to 110 minus 100. That means 10 degrees. 10 degrees will be the temperature difference. Now understand, the rate of heat flow in the rod is found to be 4.0 joules per second if the ends are maintained at the temperature 200 and 210 degree. Now if I have the rod, for example, this is another rod, and it's maintained in between the temperatures. One end is at 210 degrees and another end is at 200 degrees. Over here, what is the delta T? What is the change in the temperature? What is the temperature difference? Basically, that's again 10. In the first case, the heat flow in the rod is found to be 4 joules per second. What will be the heat flow in the second case? Understand, if I apply the formula, I can write Q upon T, that will be equal to K multiplied by A multiplied by delta T divided by L. Understand, this Q upon T, this is basically same for both the rods. This is same.
K and A, these are the constants. That means they are again going to be the same. Now length over here, there is nothing mentioned about the length. That means length is also same. And delta T, that means temperature change. That's again same. In both the cases, it is 10 degrees. Temperature change, that's again same. When all the parameters are same, that means the heat flow will again be the same. That means the heat flow is again going to be the same. That means option number A should be the right answer. Option number A should be the right answer. Hence, option number A is going to be the right answer. Everybody with me? After that, moving to the next concept, that's escape velocity or escape speed. What's that? For example, this is the Earth. This is Earth, our beautiful Earth. This is Earth, and for some reason, we need to escape from this Earth to some another planet, to the space, right? For some personal reasons, I would say. For example, we have got some velocity VE. That's enough to escape this gravitational field. That's enough to escape this gravitational field. So this VE at that instant will be called the escape velocity. Whenever we have got a velocity such that the velocity is sufficient, such that the velocity is enough to escape this gravitational field of the Earth, that velocity is called the escape velocity. I hope you got it. Now here is a quick formula for this escape velocity. What's that? Escape velocity is basically given by root of 2gm divided by the r, and it is based on the energy conservation of energy conservation of energy. Is that clear? Now here you need to remember a point, that is, what's the value of escape velocity for Earth? Velocity escape for Earth. If we talk about Earth, what's the value of escape velocity? That is going to be 11.2 kilometers per second. What does that mean? That means if you want to escape from the Earth's gravitational field for some reason, you must have 11.2 kilometers per second. If you have 11.2 kilometers per second, if you have that much speed, then only you can escape from the Earth's surface. Then only you can escape from the Earth's gravitational field. That was all about escape velocity. Now let's do some easy kill questions. Basically, this question was asked in NEET 2021. What does the question say? The escape velocity from the Earth's surface is v. We have Earth's surface and the escape velocity is v. The escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that of Earth and same mass density. Now over here, what is given to us is that the radius of that planet is same as that of the Earth, but the mass density is 4 times as that of Earth. The mass density is 4 times that of the Earth. Now, first of all, we know that the formula for escape velocity is basically root of this 2gm divided by r. In this formula, यहाँ पर हमें कहीं पर भी जो डेंसिटी है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे, कुछ इस तरीके से फॉर्म करेंगे कि हमें यहाँ पर डेंसिटी भी इंक्लूड हो जाए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ दिस विल बी 2g divided by r, and instead of this mass, what I can write, we know that density is equal to mass divided by volume, so that I can write mass will be equal to density multiplied by volume. What will be the density? Let me mark that as d, multiplied by what will be the volume? That is basically 4 by 3 pi, this is r ka cube, 4 by 3 pi r ka cube. Now 1r and 1r will cancel out from here. What I will be getting is, it will be equal to root of this is 2g multiplied by this density multiplied by this is 4 by 3. Over here it will be r square, under the root r square, but this r square will come out of the root as r, so I can write it as this r. I can write r outside this root. Is that clear? Now understand what the question says. We have the Earth has velocity, escape velocity v. The escape velocity from the another planet having a radius 4 times that of the Earth and same mass density. Now this mass density is same, but the radius is 4 times. From this equation, I got to know that escape velocity जो है, that is directly proportional to r. That means escape velocity at Earth divided by escape velocity at some planet that where I'm basically supposed to find out the escape velocity, that will be equal to the velocity, that means the radius at the Earth divided by the radius at that planet, and that's basically r up 4r. R and r will cancel out. I will get Vp, that means escape velocity at that planet, that will be equal to 4 times r. Hence the answer should
power 2. That means 4v. Hence the answer should be 4 times v. Hence the answer should be 4 times v. After that, let's move to the next question. What does the next question say? Next question says a black hole. A black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. What approximate radius would Earth have to be compressed to be a black hole? To be a black hole. अगर Earth को हमें black hole बनाना होगा तो हमें इसको कितना compression लाना होगा? हमें इसको कितना compression लाना होगा? Now understand here. In order to make this Earth as the black hole, जो escape velocity of this light होनी चाहिए. That means जो escape velocity होनी चाहिए, that should be equal to the speed of light. That should be equal to the speed of light. That should be equal to the speed of light. And speed of light is given to be 3 multiplied by 10 power 8 meters per second. 3 multiplied by 10 power 8 meters per second. Is that clear? Everybody with me? Now, let's use the escape velocity formula. What's that? That's given by root of, this is 2, this is gm divided by, this is r. Is that clear? If I square on the both sides, I will be getting ve ka square. That means escape velocity ka square. That will be equal to 2gm divided by r. This root and square will cancel out from this right hand side. From here, I can find out the value of r, and that will be equal to, this will be 2gm divided by, this will be v escape ka square. V escape ka square. Is that clear? Now substitute the values. This is 2. What's the value of g? The universal gravitational constant. That's basically 6.6 multiplied by 10 power minus 11. Is that clear? Multiplied by, what's the mass? Mass is given in the question. Mass is given in the question. That is 5.98 multiplied by. Let me approximate it. Let me take it approximately equal to 6. Let me take it approximately equal to 6. That will be 6 multiplied by 10 power 24. 6 multiplied by 10 power 24 divided by the escape velocity ka square. So the value of escape velocity should be equal to the speed of light. That means I can write over here the speed of light ka square. I can write the speed of light ka square, and for that I will write 3 multiplied by 10 power 8 ka square. 3 multiplied by 10 power 8 ka square. Is that clear? Is that clear? Now understand, this will be 12 multiplied by 2 6 are, this is 12 multiplied by, this will be 6.6. 6.6 multiplied by 10 power 13 multiplied by 10 power 13 divided by 3 ka square. That's basically 9 multiplied by 10 power 16 multiplied by 10 power 16 in the denominator. So this will be equal to, basically this will be 8.8 multiplied by 10 power minus 3. This will be 8.8 multiplied by 10 power minus 3. When this 10 power 16 goes up, it will become 10 power minus 16, and 10 power minus 16 multiplied by 10 power 13, that will obviously be equal to 10 power minus 3, right? And over here 9 will be this will be 3 3s are 9, this will be 3 4s are 12, right? And this will be 3 1s are, this will be 3 2s are, and 4 2s are will be 8. That means 8.8 multiplied by 10 power minus 3. और इसको मैं approximately अगर लिखूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर मास भी approximation में लिया था, तो इसको मैं approximately अगर round off करूंगा तो मैं इसको 10 के इक्वल टू भी ले सकता हूँ. I will write 10 multiplied by 10 power minus 3, and this 10 and 110 will go from this. I will be left with 10 power minus 2. I will be left with 10 power minus 2. 10 power minus 2. Hence the answer should be option number 3. Hence the answer should be option number 3. That means 10 power minus 2. This much radius. This is the basically the amount by which the radius must constrict. The radius of the Earth must be compressed so that it becomes a black hole. So that it becomes a black hole. Is that clear? Everybody with me? After that अगर हम next concept पे चलेंगे, next concept जो है, that's Kepler's law and satellites. Kepler's laws and satellites. In this concept we have to learn about the Kepler's laws, and after that we'll be learning the satellites. I guess first of all मैं आपको यहाँ पर satellites का थोड़ा सा concept दूंगा. For example, हमारे पास एक planet है. Let me make a planet, a round planet over here. For example, this is a planet. It has a radius capital R. It has a radius of capital R. Is that clear? Is that clear? This is a planet. This is a planet, right? And around this planet, let me make a path over here. Let me make a path, and this is the path of a satellite that moves around this planet. Is that clear? Is that clear? Let me mark over here. The satellite is over here, over this point, and the mass of the satellite is m, and the velocity of the satellite, for example, in this direction, that's equal to v. Clear hai yahan tak? And the mass of this planet is capital M. The mass of the planet is capital M, and the mass of the satellite is small m. Now, what all you need to remember over here is that first thing, that's the speed. This speed. What is the formula for the speed? The speed is given by a root of. G. This will be capital M, and this will be smaller r. Capital M divided by the smaller r.
smaller r will be the radius of this satellite. This will be the radius of this circular orbit. This is basically the circular orbit ऑफ सैटेलाइट और इसी का रेडियस जो है दैट इज स्मॉलर आर। ठीक है, ये हो गई वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी के बाद जो सेकंड थिंग है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, दैट्स टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट एंड दैट्स गिवन बाय 2 बाय रूट ऑफ आर क्यूब, दैट मीन्स स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। T will be equal to time period will be equal to 2 pi root of r cube divided by gm, capital G multiplied by the capital M. That's it. यहां पर आपको और एक बात याद रखनी है, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूंगा फॉर अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट the time period is basically 24 hours, and if I write these 24 hours in terms of the seconds, I can write 86,400 seconds. That's again important. That's again very, very important. So this was all about satellites. After that, let's talk about the planets. Let's talk about basically the Kepler's laws, right? Kepler's planetary laws are these. For example, this is the sun. This is the sun, right? And around this sun, the planets revolve. Now, according to the first law, जो path होती है, the path of the planets around the sun, that's basically elliptical. That's elliptical in nature, or in some special cases it may be circular. Right? And this is the ellipse. We know that the ellipse has got two centers. Ellipse has got two foci, right? Not the centers. Ellipse has got two foci, and according to this law, जो sun होता है, it remains at one of the foci. Now let me draw a diagram over here. This is the sun, and around this sun, let me draw the elliptical path like this. This is the elliptical path, right? This elliptical path has got two foci. For example, this is f1 and this is f2. This is f1 and this is f2. The sun will always be on the either f1 or f2. This is it. That's it, right? And for example, let me mark over here. This is the planet. यहाँ पर मैं प्लेनेट को मार्क करूंगा। अब ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये बेसिकली मेजर एक्सिस होती है। दिस इज द मेजर एक्सिस एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ से एक लाइन को ड्रा करूंगा, दिस विल बी माइनर एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक? एवरीबॉडी विद मी? आफ्टर दैट दिस पॉइंट इज कॉल्ड एपोगी। दिस विल बी एपोगी, and this point, this will be perigee. Is that clear? So this was the first law. What was the first law? First law was the path of the planet around the sun is basically elliptical, or in some special case it may be circular. This was the first law. After that, let's talk about second law. What is second law? Second law says area swept by planet divided by the time. That means area swept by the planet per unit time remains constant. That particular quantity will remain constant. Right? Or I can write it as L divided by 2m. This is going to be the constant, and L will be the angular momentum. And this will be constant. That means this will be constant. That means conservation of angular momentum holds good, and conservation of angular momentum holds good for this as well. For example, what does this law mean? Area swept by the planet per unit time is constant. For example, this is the sun, and around the sun a planet is revolving. For certain time period. For example, if I observe the planet at time t1, this was at this point, and after that, after certain interval of time, if I again observe the planet, for example, that was over this point, so the area swept by this planet or this time duration will be equal to the time period, for example, from this point and the area in between this point. The time period, the area swept by the planet around this sun during this time period, t1 to t0, that means this area
that will be equal to this area, that will be equal to this area. That's what it means, that's what it means. And whenever the planet is near to the sun, it is basically fast moving, it is basically fast moving. And when it is far away from the sun, it is slow, it is slowly moving, it is slowly moving in its orbit, it's slowly moving in its orbit. After that, let's conclude the third law over here. What is the third law? Third law says time ka square is directly proportional to r ka cube. Time ka square, the time taken by the planet to revolve around the sun, is directly proportional to the root to the cube of the radius of that orbit, to the cube of the radius, to the cube of the radius of that orbit. Is that clear? So this is for circular, this is for circular orbits. Or if we take for example, if we consider the elliptical orbit, then it will be t square will be directly proportional to semi-major axis, semi-major axis, semi-major axis ka cube. What is semi-major axis? This was the major axis, this was the major axis, and half of this basically the time, the length of from this point to this point, this is basically semi-major, this is basically semi-major axis. Is that clear? Is that clear? Earth, on the surface of Earth, the time period of another satellite whose radius is 2.5 times RE, where RE is again the radius of the Earth from the surface of the Earth, the time period will be. Now we have to find out the second time, the time period of the time period at the second height, and the second height is given to us equal to 2.5. Now we know that जो r square होता है, this is direct, जो t square होता है, time का square जो होता है, जो टाइम का स्क्वायर होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर का क्यूब. नाउ r1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? r1 की वैल्यू विल बी 6r, दिस विल बी प्लस r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, दैट मींस 7r. इन द सिमिलर वे जो r2 की वैल्यू आ जाएगी, जो r2 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2.5r प्लस द रेडियस ऑफ अर्थ, एंड इट विल बी इक्वल टू 3.5r, इट विल बी इक्वल टू 3.5r. नाउ अंडरस्टैंड कर लीजिए, यहाँ पर अगर हम ये वाली फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर अगर हम इस वाली फॉर्मूला को यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं t1 डिवाइडेड बाई t2, t1 डिवाइडेड बाई t2, दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ r1 डिवाइडेड बाई r2 होल क्यूब, r1 डिवाइडेड बाई r2 होल क्यूब. ये t स्क्वायर था, ठीक है, ये t स्क्वायर था. वहां से स्क्वायर से जब हमने यहाँ से स्क्वायर को हटाया तो इस साइड में हमने रूट लाया, बाकी ये क्यूब r का अपना ही, ठीक है. तो इसी को लिखेंगे तो t1 अपॉन t2, दिस विल बी इक्वल टू r1 की जगह हम लिखेंगे 7r डिवाइडेड बाई r2 की जगह हम लिखेंगे 3.5r, और इसी का यहाँ पर हम होल क्यूब लेना है, ठीक है. तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 3.5 1s, दिस विल बी 3.5 2s. तो t1 अपॉन t2 की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 2 पावर 3, रूट ऑफ 2 पावर 3, एंड इसी को मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 2 पावर 3, इसका मतलब होता है 8, इसका मतलब होता है 8. यहां तक क्लियर है? एवरीबॉडी विद मी? अब यहां से हम इसको सॉल्व कैसे, दैट्स इंपॉर्टेंट. यहां पर याद रखना, ये जो 8 है इसको मैं लिख सकता हूं, दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, एंड ये जो 4 है इट विल कम आउट ऑफ द रूट एज 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 रूट 2, तो मैं रूट 8 को लिख सकता हूं 2 रूट 2. दिस इज बेसिकली माई t1 अपॉन t2. तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? t2 मुझे फाइंड आउट करना है. तो t2 की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी t1 द इनिशियल टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 2 रूट 2, डिवाइडेड बाई 2 रूट 2. t1 की वैल्यू यहाँ पर है 24 आवर्स डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2. यहाँ से सॉल्व कीजिए, 2 1s, दिस विल बी 2 12s, दैट मींस 12 डिवाइडेड बाई रूट 2. इज देयर एनी ऑप्शन? नो. अब यहाँ से हम सॉल्व कैसे करेंगे? मैं ऊपर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करूंगा रूट 2 से, एंड मैं डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करूंगा रूट 2 से. तो रूट 2, दिस विल बी 12 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2, रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2, दिस इज बेसिकली 2 1s, 2 6s, दैट मींस 6 रूट 2 शुड बी द आंसर. 6 root 2 should be the answer. Hence the answer is option number 1. Hence the answer is option number 1. Clear है यहाँ तक? Everybody with me? After that is the next question. The next question says the kinetic energies of the planet in the elliptical orbit around the sun at positions A, B, and C are Ka, Kb, and Kc respectively. AC is the major axis and SB is the perpendicular to AC at the position of the sun S1 as shown in the figure. Then हमें यहाँ पर बताना है kinetic energies of different points दिया गया है. यहाँ पर है Ka kinetic energy, at this point the kinetic energy is Kb, and at this point the kinetic energy is given to be equal to Kc. Now यहाँ पर हमें एक perfect relation बतानी है in between these different kinetic energies, in between these different points having the kinetic energies as Ka, Kb, and Kc respectively. Ka, Kb, and Kc respectively. Now यहाँ पर हमें क्या understand करना है? Kinetic energy is directly proportional to speed.
काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। एंड मैंने आपको बताया है, मैंने आपको अभी जब कंसेप्ट हमने पढ़ा, मैंने आपको वहां पर बताया था, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सन, जो पॉइंट सन के नजदीक होता है, जो पॉइंट सन के नियर होता है, वहां पर स्पीड फास्ट होती है, वहां पर स्पीड फास्ट होती है। एंड जो पॉइंट फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट जो यहां से फार अवे होगा, तो वहां पर स्पीड जो होगी दैट विल बी स्लो, दैट विल बी स्लो। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड का स्क्वायर, इनफैक्ट हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं जो बी पॉइंट होगा, जो के बी होगा, इट विल बी लीस्ट, जो के बी होगा इट विल बी लीस्ट। एंड यहां पर जो के ए होगा, जो के ए होगा इट विल बी मैक्सिमम, इट विल बी मैक्सिमम। एंड इन बिटवीन दीज विल बी अ पॉइंट वेयर द स्पीड इज मीडियम। In between these two kinetic energies will be the point with the kinetic energy that's medium of the both, that's the medium of the both Ka and Kb. What will be that? That will obviously be Kb, that will obviously be Kb. Here it is Kc, here it is Kc. Kc is having a minimum energy, kinetic energy. After that is the Kb, and the maximum kinetic energy is present at Ka, because Ka is the nearest point to the sun, because Ka is the nearest point to the sun. Is there any option like this? Ka greater than Kb greater than Kc, hence the answer should be option number A, hence the answer should be option number B, hence the answer should be option number B. After that here's again a standing wave. What is a standing wave? Standing wave होती क्या है? When two waves of same energy move opposite to each other, move in the opposite directions, they form a standing wave. वो एक standing wave बनाते हैं। For example, अगर मैं यहाँ पर एक traveling wave बनाऊंगा, what will be the traveling wave? Traveling wave move करती है, traveling wave shift करती है। For example, at some instant I found a wave like this, एक ऐसी वेव थी, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम जब मैंने इस वेव को ऑब्जर्व किया, ये कुछ इस तरीके से थी, ये कुछ ऐसी थी, ठीक है। तो इसने यहां से यहां तक ये शिफ्ट किया, इसने यहां से यहां तक ये शिफ्ट किया, इसने यहां से यहां तक ये शिफ्ट किया। इन द सिमिलर वे अगर मैं इसको थोड़ी और टाइम के बाद देखूंगा, तो दिस विल बी लाइक दिस, दिस विल बी लाइक दैट, राइट। तो इसने अगेन थोड़ा सा शिफ्ट किया, तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज बेसिकली द ट्रैवलिंग वेव। इन द सिमिलर वे अगर मैं एक स्टैंडिंग वेव बनाऊंगा, व्हाट विल बी द स्टैंडिंग वेव? फॉर एग्जांपल आई ऑब्जर्व्ड एट अ पॉइंट, स्टैंडिंग वेव मैंने एक इंस्टेंट पे ऑब्जर्व की, ठीक है, कुछ इस तरीके से थी स्टैंडिंग वेव। एंड आफ्टर दैट व्हेन और एक इंस्टेंट पे मैंने इसको ऑब्जर्व किया, तो स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरीके से अगेन, तो स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम जब मैंने अगेन इसको ऑब्जर्व किया, तो स्टैंडिंग वेव मुझे कुछ इस तरीके से मिली, तो स्टैंडिंग वेव मुझे कुछ इस तरीके से मिली, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव मुझे कुछ इस तरीके से मिली। अब यहां से हमने ऑब्जर्व क्या किया? यहां से हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ पॉइंट जो है उन्होंने मूव नहीं किया, लाइक दिस पॉइंट, लाइक दिस पॉइंट, लाइक दिस पॉइंट, इन्होंने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दिखाई। दे डिड नॉट शोड एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, इन्होंने कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई। और वी कैन से दैट these points are the fixed points of this wave, these points are the fixed points of this wave. And what do we call these points? This point, this point, this point, and this point, these are called antinodes. These are called antinodes. These are called nodes, these are called nodes, these are called nodes, my dear people. These are called the nodes. This point, this point, this point, and this point, these are called the nodes. And in the similar way, if I talk about this point, this point, this point, and this point, these points with the maximum amplitude, these have maximum amplitude, these points with the maximum amplitude, these are called antinodes, these are called antinodes, these are called antinodes, my dear people. Is that clear? Everybody with me now? यहाँ पर और एक बात को अंडरस्टैंड करना है, दिस वेव ये अगर मैं ऊपर की तरफ देखूंगा कुछ इस तरीके से होगी, और अगर मैं नीचे की तरफ देखूंगा तो नीचे की तरफ भी ऑब्वियसली ये कुछ इस तरीके से होगी। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है, व्हाट्स दैट कॉल्ड? इसको हम बोलते हैं लोब, या हम इसको बोलते हैं लूप, तो हम बोलते हैं लोब्स। मैं यहाँ पर लोब्स बोलूंगा, इनको हम बोलते हैं लोब्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर मैं एक ट्रैवलिंग वेव की बात करूंगा, तो मैं अगर इसकी इक्वेशन को लिखूंगा, मैं क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं y इक्वल टू a साइन ऑफ दिस इज kx प्लस माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक है। व्हाट इज प्लस माइनस? प्लस और माइनस का हम प्लस और माइनस डिटरमाइन ये करेंगे कि वेदर द वेव इज गोइंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर हमने यूज किया साइन प्लस को, दैट मीन द वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और अगर हमने माइनस साइन का यूज किया, दैट मीन्स द वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव x direction, the wave is traveling along the positive x direction. That's it, everybody with me? After that अगर मैं similar
इक्वेशन लिखूंगा स्टैंडिंग वेव के लिए। ये तो थी, ये हमको पता है कि ट्रैवलिंग वेव के लिए ये इक्वेशन होती है। नाउ इफ आई वाज सपोज्ड टू राइट द सेम सिमिलर इक्वेशन फॉर द स्टैंडिंग वेव, how can I write that? I would write, what would I write? I would write y will be equal to, this will be 2a sine of kx, sine of omega t or cos of omega t, whatever you are going to take. Let me take over here cos of omega t, cos of omega t, that's it। ये जो k है यहाँ पर याद रखना, ये जो k है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं वेव नंबर, and this is equal to 2 pi upon lambda, and this is equal to 2 pi upon lambda, again that's very important। and ये जो 2a है, ये जो 2a है, this is the amplitude of the one wave, एम्पलीट्यूड ऑफ एनी वन वेव। जब दो वेव स्टैंडिंग वेव बनाती है, ठीक है, उनकी अपोजिट डायरेक्शन होती है, उनमें से किसी का भी एम्पलीट्यूड हम लेंगे, उसी को हम बोलते हैं 2a, उसी को हम बोलते हैं 2a। नाउ माय डियर पीपल, यहाँ पर हमारे पास स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास बहुत सारी कॉम्बिनेशन बनती है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ स्ट्रिंग दैट्स फिक्स्ड एट वन पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को फिक्स किया है, ठीक है, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को फिक्स किया है। कुछ इस तरीके से वेव्स की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, ठीक है। और सेकंड केस जो होगा दैट विल बी लाइक दिस, मैं यहाँ पर बनाऊंगा, दैट विल बी लाइक दिस इज द स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रिंग एंड दिस इज ओपन फ्रॉम दिस साइड, एंड इस साइड से ये ओपन है, ठीक है, दिस इज द ओपन साइड, और मैं बोलूंगा दिस इज द फ्री साइड। ये सिमिलर कंडीशंस होंगी, ये सिमिलर केसेस होंगे अगर मैं यहाँ पर लूंगा एक पाइप को मैं यहाँ पर लूंगा जो कि क्लोज है एक साइड से, दैट्स क्लोज्ड, और इसमें जो नोड बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, the wave will be like this। तो ये वाला केस और ये वाला केस, ये these are the one and the same thing, in the similar way अगर मैं इस free end को यहाँ पर बनाऊंगा, it will be like the pipe, it's just like the pipe that's open from one end, and the waves will be like this, तो यहाँ पर क्या बनेगा, this will be antinode, and ये क्या है, this will be node, this point is basically node again, and ये वाला जो point है the free end, that is basically antinode, that's basically antinode। I hope that's clear। now here are the possibilities of different combinations। यहाँ पर बहुत सारी combinations बनती है। for example we have a string that's fixed at both ends, for example we have a string, for example we have a string that's fixed at both the ends, these are the ends, end 1 and end 2, we have a string that's fixed at both the ends, correct, this is fixed, this point is fixed, and this point is also fixed, this is similar to the pipe that is closed at both the ends, this is similar to the pipe that's closed to the both ends, this is closed end, this is again closed end, this is again closed end, right। तो ये सिमिलर केस बन जाएगा यहाँ पर, सेकंड केस, व्हाट विल बी द सेकंड केस बन जाएगा, एक स्ट्रिंग है हमारे पास जो कि एक साइड में तो फिक्स है बट दूसरे साइड में वो ओपन है, फॉर एग्जांपल दिस इज द फिक्स्ड एंड एंड दिस इज द ओपन एंड, तो ये वाला केस, दिस विल बी सिमिलर टू द केस ऑफ द पाइप दैट इज ओपन एट वन एंड एंड क्लोज एट अनदर एंड, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से ओपन है, ये एक पाइप है, दिस इज ओपन फ्रॉम दिस एंड एंड दिस इज क्लोज्ड फ्रॉम द अनदर एंड, दिस इज द क्लोज्ड एंड एंड दिस एंड इज द बेसिकली ओपन एंड, ठीक है। तो ये हो गई कॉम्बिनेशन नंबर 2, आफ्टर दैट हमारे पास थर्ड कॉम्बिनेशन बन सकती है। व्हाट विल बी द थर्ड कॉम्बिनेशन विल बी अ स्ट्रिंग दैट्स ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स, this is as similar to that a pipe that is open at both ends, now here the different patterns can be formed, यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न्स बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोज जो इस वाली पाइप को देखूंगा दैट्स क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, मेरे पास कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मेरे पास फॉर्मेशन बन सकते हैं, दिस इज वन नोड, दिस इज अनदर नोड, यहाँ पर दोनों तरफ से नोड्स बनेंगे, और मेरे पास कुछ इस तरीके से भी कॉम्बिनेशन बन सकती है, दिस विल बी वन नोड, यहाँ पर एंड पे भी नोड है, ठीक है। सिमिलरली हम इसको अगेन प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर द मेन पॉइंट इज दैट अगर मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी विल बी NV/2L एंड ऑल द हार्मोनिक्स विल बी फॉर ऑल द हार्मोनिक्स। अगर मैं इस केस नंबर सेकंड को यहाँ पर एनालाइज करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, ये वाला जो क्लोज एंड है, यहाँ पर मेरे पास बनेगा नोड, एंड ये जो ओपन एंड है, यहाँ पर मेरे पास बनेगा एंटी,
दिस विल बी नोड एंड दिस विल बी एंटी नोड, दिस विल बी माई नोड, ये मेरा नोड बन जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर मैं और एक केस भी बता सकता हूँ, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पर नोड बनेगा और यहाँ पर मेरे पास अल्टीमेटली एंटी नोड बनेगा, वहां पर वो क्लोज नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी द ऑड मल्टीपल ऑफ v अपॉन 4l, ऑड मल्टीपल ऑफ v अपॉन 4l, ऑड मल्टीपल ऑफ v अपॉन 4l, दैट मीन्स यहाँ पर मुझे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिले, यहाँ पर मुझे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स को देखूंगा, यहाँ पर मुझे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे। और यहाँ पर जो थर्ड केस है, दिस इज द थर्ड केस, और जो थर्ड केस है दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस की ही तरह है। एक साइड में भी नोड बनेगा, दूसरी साइड में भी एंटी नोड बनेगा, लाइक दिस। मैं यहाँ पर बनाऊंगा एंटी नोड, दोनों तरफ यहाँ पर एंटी नोड बन गया, कुछ इस तरीके से मैं बना सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं बना सकता हूँ, यहाँ पर भी एंटी नोड बन गया, यहाँ पर भी एंटी नोड बन गया। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, अगेन फ्रीक्वेंसी विल बी एन वी अपॉन 2l, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस, और यहाँ पर भी ऑल द हार्मोनिक्स आएंगी, यहाँ पर भी सारी की सारी हार्मोनिक्स आएंगी, ठीक है। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, किसमें, ये फर्स्ट हार्मोनिक क्या होता है, फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड इन दिस वे, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल वी हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, frequency number 1 is 10 hertz, frequency number 1 is 10 hertz, frequency number 1 that I have got is 10 hertz. Let me change the pen first of all, let me change the pen. Okay, for example we have different frequencies. Frequency number 1 10 hertz, frequency number 2 20 hertz, frequency number 3 that I got is 30 hertz. In the similar way I have frequency number 4 that is 40 hertz. Now ये जो 10 hertz है, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट हार्मोनिक, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट हार्मोनिक। अगर ये मेरे पास फर्स्ट हार्मोनिक है, तो आफ्टर दैट जो 20 है, दिस इज बेसिकली द सेकंड मल्टीपल ऑफ दिस 10, दिस इज बेसिकली द सेकंड मल्टीपल ऑफ दिस 10, तो इसको मैं बोलूंगा सेकंड हार्मोनिक, इसको मैं बोलूंगा सेकंड हार्मोनिक, इसको मैं बोलूंगा सेकंड हार्मोनिक, ये इंपॉर्टेंट है। इन द सिमिलर वे ये जो 30 है, दिस इज द थर्ड मल्टीपल ऑफ दिस 10, दिस इज द थर्ड मल्टीपल ऑफ दिस 10, तो इसको मैं बोलूंगा थर्ड हार्मोनिक, इसको मैं बोलूंगा थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। इन द सिमिलर वे अगर मैं 40 को देखूंगा, 40 हर्ट्ज को देखूंगा, दिस इज द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 10, दिस इज द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 10, तो इसको मैं बोलूंगा दिस विल बी द फोर्थ हार्मोनिक, दिस विल बी फोर्थ हार्मोनिक, दिस विल बी फोर्थ हार्मोनिक। अब ओवरटोन्स पे आ जाओ, अगर मैं फर्स्ट हार्मोनिक को देखूंगा, अगर मैं फर्स्ट हार्मोनिक को देखूंगा, तो इसको मैं बोलूंगा फंडामेंटल, दिस इज फंडामेंटल, दिस इज फंडामेंटल। आफ्टर दैट अगर मैं सेकंड हार्मोनिक को देखूंगा, दिस विल बी माय फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ पर थर्ड हार्मोनिक को देखूंगा, थर्ड हार्मोनिक मेरा क्या बन जाएगा, दिस विल बी सेकंड ओवरटोन, दिस विल बी सेकंड ओवरटोन, दिस विल बी सेकंड ओवरटोन। अगर मैं फोर्थ हार्मोनिक की बात करूंगा, फोर्थ हार्मोनिक विल बी थर्ड ओवरटोन, दिस विल बी थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है। नाउ अंडरस्टैंड करना, अगर मैं यहाँ पर आपको और एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गए। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 10 हर्ट्ज, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 10 हर्ट्ज, लेट मी रीड दिस। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 10 हर्ट्ज, आफ्टर दैट मेरे पास है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, आफ्टर दैट मेरे पास है 50 हर्ट्ज, एंड आफ्टर दैट मेरे पास है 70 हर्ट्ज, आफ्टर दैट मेरे पास है 70 हर्ट्ज। नाउ अगर मैं यहाँ पर हार्मोनिक्स की बात करूंगा, अगर मैं यहाँ पर हार्मोनिक्स की बात करूंगा, दिस विल बी माय फर्स्ट हार्मोनिक, first harmonic, first harmonic. After that the 20, what will be the 20 will be the second harmonic, this will be the second harmonic. Now जब मैं 50 पे आ जाऊंगा, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे आ जाऊंगा, 50 क्या है, 50 is basically the fifth multiple of this first harmonic, 50 is basically the fifth multiple of this first harmonic, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा this will not be my third harmonic, this will be basically fifth harmonic, this will be fifth harmonic. In the similar way, what is 70, 70 is the seventh multiple of this first harmonic, that means it is going to be the seventh harmonic, it is going to be the seventh harmonic. However, in case of writing the overtones, it doesn't matter कि एक जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है कि वो कौन सी मल्टीपल है, हम सीधे लिखते हैं ऑर्डर में। जो पहला होगा दिस विल बी द फंडामेंटल, दिस इज गोइंग टू बी द फंडामेंटल। जो सेकंड होगा, सेकंड विल फर्स्ट ओवरटोन, this will be first overtone, this will be second overtone, this will be second overtone. After that जो आएगा that will be third overtone, that will be third overtone, that will be third overtone. Everybody with me on that. After that let's do some questions. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, a string of length L is fixed at both the ends. Here is a string जो कि फिक्स है, इस साइड में भी फिक्स्ड है और इस साइड में भी फिक्स्ड है। अंडरस्टैंड करना इसको। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि फिक्स्ड है बोथ एंड्स पे एंड इज वाइब्रेटिंग इन द सेकंड हार्मोनिक, एंड ये जो स्ट्रिंग है ये वाइब्रेट करती है सेकंड हार्मोनिक में। एम्पलीट्यूड एट द एंटीनोड इज 2 mm। अगर हम एंटीनोड पे देखेंगे एम्पलीट्यूड को, तो एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी 2 mm।
मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस इज बेसिकली 2 mm, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एट द डिस्टेंस ऑफ L/8 फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। इस फिक्स्ड एंड से लेके L/8 पे हमें बताना है कि इसकी क्या होगी, what will be the amplitude of the particle, what will be the amplitude of the particle। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करना, अगर मैं इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव लिखूंगा, अगर मैं इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव लिखूंगा, equation of standing wave लिखूंगा, what I can write, I will write y will be equal to 2a sin of kx dot cos of omega t, right। तो ये जो cos of omega t है ये बेसिकली है फंक्शन ऑफ टाइम, दैट मींस इट डिपेंड्स ऑन द टाइम। एंड ये वाली जो टर्म है बेसिकली 2a sin of kx, दिस विल गिव मी द एम्पलीट्यूड, दिस इज गोइंग टू गिव मी द एम्पलीट्यूड, दिस इज गोइंग टू गिव मी द एम्पलीट्यूड। तो यहां से मैं लेमडा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एल के इक्वल टू, अंडरस्टैंड करना, अगर मैं एम्पलीट्यूड को लिखूंगा, ये देखना ये मैंने कहां से लाया, अब देखना अगर मैं एम्पलीट्यूड को यहां पर लिखूंगा, अगर मैं यहां पर एम्पलीट्यूड को लिखूंगा, एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू 2a sin ऑफ दिस kx, राइट। 2a को मैं ऐसे ही लिखूंगा, दिस विल बी 2a डॉट दिस विल बी sin ऑफ के इंस्टेड में लिख सकता हूं 2 पाई अपॉन लेमडा मल्टीप्लाइड बाय x। Now 2a के इंस्टेड में यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2a that's basically the amplitude and amplitude is given to us equal to 2 mm, that means 2 mm dot this will be sin of, अब यहाँ से देखिए this will be 2 pi upon लेमडा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ l, लेमडा के इंस्टेड यहाँ पर मैं लिखूंगा l dot x, जहां पर हमें फाइंड आउट करना है वो लेंथ कितनी दी गई है, that's basically L upon 8, L and L will cancel out, 2 1s are, this is 2 4s are, this is 2 1s are, this is 2 4s are, that means 2 mm dot sin of, this will be sin of 1 upon 4 sin of 1 upon 4, is that clear everybody with me। तो मैं लिख सकता हूं this will be 2 mm dot 1 upon root of 2 और इसी को मैं फर्दर अगर लिखूंगा तो that will be equal to root 2 mm, hence answer should be option number 3, I hope that's clear। This was asked in NEET 2019। After that, moving to the next question, what does next question say? Next question says the length of the string of the musical instrument is 90 centimeters and has a fundamental frequency of 120 hertz, where should it be pressed to produce a fundamental frequency of 180 hertz। हमें इसको प्रेस कहां पर करना है ताकि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करे, that with having the frequency of 180 hertz। First of all, read the question carefully। The length of the string of the musical instrument is 90 centimeters, we are given with length, right। Now अगर मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला को यूज करूंगा, that will be equal to n, this will be v upon 2l, and the frequency is given to me equal to 120, that means 120 will be equal to, what's the value of n, basically 1 multiplied by v upon 2 multiplied by what's the value of l, that's basically 90, from here can I find out the value of v, yes, v will be equal to 120 multiplied by 2 multiplied by 90, that means v will be equal to 120 multiplied by 180, 120 multiplied by 180, is that clear। now यहाँ से मैं लिख सकता हूँ this 180, let me write it with another pen, this 180, ये जो 180 है this will be equal to 1 multiplied by v upon 2 multiplied by l, 1n v divided by 2l, I have used the similar formula, that will be equal to 180 will be equal to 1 को मैं नहीं लिखूंगा, what will I write instead of this v I will write 120 multiplied by 180 divided by 2 multiplied by this l, what's l over here, l की वैल्यू यहाँ पर l ही रखेंगे, 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, this will be 2 1s are, this will be 2 60s are, that means L की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई 60 के इक्वल टू 60 सेंटीमीटर्स के इक्वल टू, as simple as that, hence the answer should be option number 2, this was also asked in NEET 2019 वाला question। after that let's move to the next concept, that's the concept of beats and Doppler effect। firstly understand what beats are actually, beats होती क्या है, these are basically the how these are produced, by the alternating loud and faint sound produced by interference of two similar sounds। जब हमारे पास दो सिमिलर साउंड्स होंगे
जब उनकी इंटरफेरेंस होती है तो वो मिलती है और वो वहां पर जो साउंड प्रोड्यूस करती है वो कभी लाउडर सुनाई देती है, वो कभी फेंट सुनाई देती है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं बीट्स। फॉर एग्जाम्पल जो साउंड हमने सुनी वो पहले लाउड थी, एंड आफ्टर सम टाइम that became faint. After some time that will again be loud, and after some time that will again be faint. Understand करना यहाँ पर, पहले loud, after that faint आ गई, after that loud आ गई, and after that faint आ गई. अब यहाँ पर understand करना, this loud to loud, the time period from this loud to loud, this is called beat. This is called beat period. Or I can say the time from this faint to this faint, इसको मैं बोलूंगा टाइम पीरियड, और इसी को मैं बोलूंगा बीट पीरियड. इज दैट क्लियर? और यही जो बीट पीरियड होता है, लेट मी मार्क दिस बाय टी. यही जो बीट पीरियड होता है, लेट मी राइट इट ओवर हियर. यही जो बीट पीरियड होता है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. बेसिकली दिस इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. This is basically equal to the inverse of frequency. Is that clear? 1 upon frequency is equal to the beat period, or I would say the time period of a beat. और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, how can we find out the frequency of this beat? That means beat frequency will be the magnitude of f1 minus f2, where f1 is the frequency of body 1 or sound 1, and f2 is going to be the frequency of the sound second. Is that clear? And this f beat, this is basically what I said just now. This beat frequency is basically 1 upon time, or I would say time is basically 1 upon this beat frequency. Is that clear? This was all about beats. After that, Doppler. Understand Doppler effect. Why Doppler effect? Because whenever there is the relative motion in between source and listener, apparent frequency that is heard by the object, that's basically different. Due to relative velocity, relative motion, I would say, relative motion between source and observer, or I would say source and listener, the apparent frequency heard is different. That's basically different. Now understand. For example, मेरे पास एक source है. यहाँ पर एक source है. This is the source, and it emits some sound like this. साउंड कुछ इस तरीके से जा रही है और साउंड कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक लिसनर है. लेट मी मार्क दिस एज एल. यहाँ पर मेरे पास एक लिसनर है, ठीक है. यहाँ पर मेरे पास एक लिसनर है. ये जो सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल इसकी जो स्पीड है दैट इज वीएस वेलोसिटी से ये चल रहा है, एंड ये जो लिसनर है ये वीएल की स्पीड से चल रहा है, और यहाँ पर जो इसने फ्रीक्वेंसी सुनी वो है f1, और यहाँ पर जो बेसिकली ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वो थी f0. तो मैं कैसे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू दिस डुपलर इफेक्ट? ये जो f1 है दैट इज द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, दैट इज f1. दिस विल बी इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, दैट मींस f0. फिर आप क्या करोगे? स्पीड ऑफ लाइट लिखोगे. नीचे भी लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से, स्पीड ऑफ लाइट, और ऊपर जो न्यूमरेटर है वहां पर आप लिखोगे डिटेक्टर, और वहां पर आप लिखोगे स्पीड ऑफ दिस लिसनर, और मैं यहाँ पर लिखूंगा VL, और यहाँ पर मैं लिखूंगा VS इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड VL इज द वेलोसिटी ऑफ लिसनर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस माइनस, और यहाँ पर भी मैं लिखूंगा प्लस माइनस. अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है टू determine whether we are going to take this plus sign over here or we are going to take this minus sign over here, right? This is all about this taking the sign over here. यहाँ पर सब कुछ जो खेल होता है वो इस साइन का होता है. अब यहाँ पर मैं आपको एक इजी वे बताऊंगा. जब कभी भी आपको एक सोर्स और ये जो लिसनर है, दिस इज अ लिसनर एंड दिस इज सोर्स, जब भी आपको लिसनर एंड सोर्स क्लोजर आएंगे, एट दैट टाइम क्या होगा? लॉजिकली थिंक करो. एट दैट टाइम क्या होगा? जो लिसनर फ्रीक्वेंसी सुनेगा दैट विल बी मोर, दैट विल बी मैक्सिमम. दैट मीन्स जो न्यूमरेटर होगा दिस विल इंक्रीज, एंड जो डिनोमिनेटर होगा दैट्स गोइंग टू बी डिक्रीज, दैट्स गोइंग टू डिक्रीज. इज दैट क्लियर? इन द सिमिलर वे, whenever you have two objects, one is source and another is listener, and they go far away from each other, for example they go far away from each other, what would happen? जो apparent frequency होगी that will be less. जब source and जो ये listener है, जब ये आपस में दूर हो जाएंगे,
एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो फ्रीक्वेंसी होगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, दैट विल बी मिनिमम। सो यहाँ पर क्या आना चाहिए, लॉजिकली थिंक करो, जो न्यूमरेटर होगा वो डिक्रीज होगा, एंड जो डिनोमिनेटर होगा दैट शुड इंक्रीज, दैट्स हाउ इट वर्क। जब भी आपको क्लोजर आएगा तो ऊपर वाला यहाँ पर जो आप लोगे, यहाँ पर आप लोगे प्लस साइन, और नीचे जो है नीचे आप लोगे माइनस साइन, एंड वेन एवर द सोर्स एंड दिस लिसनर आर मूविंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एट दैट टाइम आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में आप माइनस लोगे एंड डिनोमिनेटर में आप प्लस लोगे, न्यूमरेटर में आप माइनस लोगे एंड डिनोमिनेटर में आप प्लस लोगे। Is that clear, everybody with me? After that, let's do a question that was asked basically in NEET 2020, NEET 2020. In a guitar, two strings A and B made of same material are slightly out of tone and produce beats of frequency 6 hertz. We got the frequency of 6 hertz. Is that clear? When the tension in B is slightly decreased, जब हमने slightly tension को decrease किया, the beat frequency increases to 7 hertz. जो beat frequency है, it slowly decreased to 7 hertz. If the frequency of the A is 530 hertz, अगर frequency 530 hertz है, the original frequency of the B is. अंडरस्टैंड करना मैं इसको कैसे करूंगा, जो बीट्स यहाँ पर दी गई है, वो दी गई है 6 हर्ट्ज, दैट इज 6 हर्ट्ज। अंडरस्टैंड करना, मेरे पास जो ए की फ्रीक्वेंसी दी गई है दैट इज 530 हर्ट्ज। नाउ यहाँ पर मेरे पास बी के जो B1 है, एंड यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा B2। यहाँ पर मेरे पास बी के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, टोटल मेरे पास आना चाहिए, डिफरेंस आनी चाहिए मेरे पास 530, 6 के इक्वल आनी चाहिए मेरी डिफरेंस। दैट मींस यहाँ पर बी की दो वैल्यूज आ सकती है, या तो होगा 524 हर्ट्ज, या मेरे पास क्या आना चाहिए, 536 हर्ट्ज, या मेरे पास आना चाहिए 536 हर्ट्ज। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज, इज दैट क्लियर? नाउ अंडरस्टैंड करना, जब हमने टेंशन को स्लाइटली इंक्रीज किया, तो नंबर ऑफ बीट्स मुझे कितनी मिली, 7 बीट्स। तो ये वैल्यू अगर मैं देखूंगा एट दैट टाइम, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 537, दैट मींस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंक्रीज हो गई, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 537। और अगर मैं इस वैल्यू को देखूंगा, दिस विल बी बेसिकली 523, दैट मींस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया गया है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो गई है, हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1, हेंस द आंसर शुड बी दिस statement number 1 basically, that is 524, and the answer should be option number 1, and the answer should be option number 1. Is that clear? After that is there is another concept, that's concept of wave speed on the string and sound. That's important concept and the last concept of this section. अब यहाँ पर understand क्या करना है, for example we have a string that's under tension, this is having tension T, राइट, एंड जब हमने इसमें एक वेव को प्रोड्यूस किया कुछ इस तरीके से, और उस वेव की स्पीड जो है दैट इज फॉर एग्जांपल v, नाउ दिस स्पीड ऑफ दिस वेव विल बी गिवन बाय रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू। ये जो t है इसको मैं बोलूंगा टेंशन, इन द स्ट्रिंग, एंड ये जो u है, व्हाट इज दैट, दैट्स बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ, करेक्ट। कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया होता है कि मास पर यूनिट लेंथ कितना होता है, एट दैट टाइम म्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे, दिस विल बी बेसिकली डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, दिस इज डेंसिटी एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। इज दैट क्लियर? when we talk about the longitudinal wave, for example sound, अगर हम साउंड की बात करेंगे तो साउंड की डिफरेंट स्पीड हो सकती है, ठीक है। साउंड ट्रैवल इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, वी नो दैट, करेक्ट। तो अगर मैं सॉलिड्स की बात करूंगा, डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूलाज दूंगा, वी सॉलिड, अगर मैं सॉलिड्स की बात करूंगा, सॉलिड्स में साउंड क्या होती है, साउंड की वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज गिवन बाय रूट ऑफ, दिस विल बी y अपॉन दिस विल बी रो। व्हाट इज दिस y? दिस विल बी बेसिकली यंग्स मॉड्यूलस, यूजुअली ये गिवन होता है क्वेश्चन में, एंड व्हाट इज दिस रो? दिस इज बेसिकली डेंसिटी। Point number 1. Point number 2 is that whenever we talk about the sound traveling in gases, right? मैं बोलूंगा यहाँ पर, let me write it with another pen. अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा V gases में क्या स्पीड होती है, that will be gamma, this will be P, and this will be divided by rho. This P is basically pressure.
this P is basically pressure, and this rho, ये जो rho है यहाँ पर, what's this rho? Rho is basically density of that particular gas. And what's this gamma? What's this gamma? This is basically Cp upon Cv. This is basically Cp upon Cv. In the further way मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ V of gas. This is equal to, in the other way मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? This will be gamma, this will be R, this will be T, and divided by m, where m is going to be the molecular mass of that particular gas, This was case number 2. And case number 3, that's the last, that will be velocity of sound in a liquid. How to calculate that? That's given by root of, this will be B upon this density. This is basically given by root of B upon a density. What's B? B is the bulk modulus. And what's this? This is basically again going to be the density. I hope that's clear. Everybody with me? After that, let's do some questions. This is the question that is asked in NEET 2022. If the initial tension on the stretched string is doubled, जब हमने tension को double किया, that means T2 को हमने बनाया 2 times T1. Understand करना. Then the ratio of initial and the final speeds of the transverse wave along the string is. हमें बताना है कि रेशियो ऑफ साउंड क्या हो जाएगा. नो अंडरस्टैंड करना. जस्ट नाउ मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला दी थी कि वेलोसिटी जो है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर डिवाइडेड बाय म्यू. From this equation, I can write जो velocity होगी that will be directly proportional to the root of temperature. Or I can write that V1 upon V2. V2 I am supposed to find out. That will be equal to root of, this will be T1 divided by T2. Or further I can write it, that will be equal to T root of T1 divided by what's T2. T2 is basically 2 times T1. T1 and T1 will cancel out. What will I get? I will get V2 is going to be equal to V1 multiplied by root 2. But I am supposed to find out the ratio. What will be the ratio? Ratio is basically V1 upon V2, and that's equal to 1 upon root 2. Hence the answer should be option number 4. I hope that's clear. Everybody with me over that? After that, moving to the next question. Next question says, if N1, N2 and N3 are the fundamental frequencies of 3 segments into which a string is divided, then the original fundamental frequency N of the string is given by. What is the original frequency given by? अगर मैं यहाँ पर लेंथ की बात करूंगा, what will be length? Length will be V upon 2n. Understand? तो मैं यहाँ से n की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? This will be V upon, मैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? That will be V upon 2l. Understand करना. तो टोटल लेंथ जो मेरे पास आ जाएगी वो हो जाएगी L1 प्लस L2 प्लस L3, तो इसको मैं अगर इन टर्म्स ऑफ दिस n लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं दिस विल बी V अपॉन twice n, that will be equal to V upon 2 times n1 plus V upon 2 times n2 plus V upon 2 times n3. Everybody with me? तो इसी को मैं फर्दर लिख सकता हूँ V and V कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. Well, what I will actually get ultimately, I will get 1 upon n, that will be equal to 1 upon n1 plus 1 upon n2 plus 1 upon n3 plus 1 upon n3. Everybody with me? 1 upon n1 will be equal to 1 upon n will be equal to 1 upon n1 plus 1 upon n2 plus 1 upon n3. Everybody with me? I hope that's clear. This was after in NEET 2014. I hope that's clear. Okay. So these were the most important 10 topics out of the 30 topics that we just discussed. I hope कि आप सबको सारे के सारे concepts पसंद आए होंगे और सारे के सारे questions में आपको मजा आया होगा. And if you really enjoyed the video, please like the video. Do not forget to subscribe the channel as well. हम मिलेंगे next video में. तब तक के लिए okay, bye.